हे गाइस, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, आई एम प्रेरक मेहता और मैं अपनी जर्नी एज द फाउंडर ऑफ नेट माफिया, एक वेब डिज़ाइन एंड एसईओ मार्केटिंग एजेंसी यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट करता हूँ। अब क्योंकि मैं मेरे क्लाइंट एसईओ प्रोजेक्ट के लिए बैकलिंक्स बिल्ड कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हाईलाइट अबाउट डिफरेंट एंकरिंग स्ट्रैटेजी। विदाउट अ क्लियर एंकर स्ट्रैटेजी, चाहे आप जितनी भी डाइवर्सिफाइड नीश रेलेवेंट बैकलिंक्स ले लो, इट वोंट बी एज इफेक्टिव। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि कितनी बैकलिंक्स चाहिए आपके वेबसाइट के लिए, तो चेक आउट दिस वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन, क्योंकि ये लिंक बिल्डिंग सीरीज का कंटिन्यूएशन है। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ anchor text you would normally see is this, which is a generic one. So let me first just write down a generic one, and this would probably contain something like click here, or maybe something like visit. You know what, I'll just add two spaces so that it's easy for us to understand, and website. So I hope you guys do know about some basics of anchoring is basically a text in which you are embedding a link back to your site. नाउ जेनेरिक एंकर्स की अगर बात करें तो ये बहुत ही एक ओल्ड स्कूल मेथड है। जब इंटरनेट नया था, सर्च इंजन्स भी नए थे, तो तब अगर आपको कोई ब्लॉग या वेबसाइट पे आपको मेंशन कर रहे थे, तो दे वुड टिपिकली यूज दिस काइंड ऑफ एन एंकर टेक्स्ट। आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। दिस, in my humble opinion, is the biggest waste of a backlink that you could ever do, because more often than not, you are going to spend money on getting backlinks, and if it ends up with a generic anchor, you're missing the opportunity. Not only search engines like Google won't understand who you are and why there is a link mentioned in this particular guest post or an article, but also the traffic which will be landing on that linking source would never click on your website. So if you're getting link with this generic anchor text because your content is top notch and people are referring to you for completely free, that's all right. But still, even in those cases, मैं तो उन्हें रीच आउट करता और कहता कि भाई, क्या आप एंकर चेंज करके जेनरिक एंकर से कोई दूसरे एंकर रख सकते हो क्या? सो आई वुड गो दैट राउट. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अ जेनरिक एंकर text, and this is pretty useless, as I said. Next up we have is the branded anchors. So let's say my company name is Net Mafia, so this could be my branded anchor. Now these are really safe and strong, and the only reason why I say this, because it signals to Google and other search engines about your brand and increases your brand identity. So the next time if some hot lead wants to maybe reach out to you but doesn't remember your website URL, they might just hop on to Google or some any other search engine and type in your business name. And if it shows up, and if the search results shows up someone else's website on the top results, you really have to get going and making sure you get branded anchors whenever you are getting backlink. आपको ये ब्रांडेड एंकर ज़्यादातर तब मिलेंगे जब आप किसी और के पॉडकास्ट पे एज अ गेस्ट अपीयर कर रहे हो, या कोई ऑथर बायो लिंक मेंशन हो रहा है। एंड इफ़ यू आरंट श्योर हाउ यू can appear on different podcasts as a guest, you can watch this video later on. All right, so the next up we have is the exact match anchor. So let's say this is my anchor, which is SEO for accounting firms. राइट, सो व्हाट इज दिस, इसका क्या मतलब है? वेल, मान लो कि आपने बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा खुद के बोफू पेज पे। अब अगर किसी को नहीं पता कि ये बोफू पेज क्या होता है, देन आई हाईली रिकमेंड यू चेकिंग आउट दिस वीडियो इन द एंड, वेयर आई गो ओवर क्रिएटिंग डिफरेंट कंटेंट briefs and stages of an SEO funnel. But right now, let's not deviate from that topic. We are focusing on anchoring strategy right now. सो एग्जैक्ट मैच एंकर में आपका टारगेट कीवर्ड होगा जिसके अराउंड आपने कंटेंट क्रिएट किया है आपके वेबसाइट पे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस कीवर्ड के लिए मेरा पेज रैंक करूँ, देन आई वुड मेक श्योर दैट व्हेनेवर आई गेट अ लिंक, देयर इज एन एग्जैक्ट मैच एंकर विद इन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट और कंटेंट, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसका ओवर यूज़ करें। Over reliance on just one technique is never a good strategy, so make sure you are following a balanced approach. By the way, guys, I have an AI local SEO course on Udemy in which I dive deep into building backlinks for free using bunch of different AI tools, and I have created specifically for beginners. The course content clocks over 7 hours of video lectures. I've got hundreds of students with dozens of 5-star reviews, so it's a really great return on investment.
Don't forget to check out the link mentioned in the pinned comment. Again, coming back to this video, another really powerful anchor we have is a naked anchor. So let me just write it down here, which is a naked. अब इसका क्या मतलब होता है? Like this, https followed by, let's say, my URL netmafia.co.in. अब ये naked URL ना ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि बहुत ही सेफ भी होते हैं. शायद आप ये पूछेंगे क्यों? Well, if you want a backlink to your content page on your site, most likely your URL structure would look something similar to this, where let's say my blog post, यानी कि मान लीजिए कि netmafia.co.in के बाद मेरा service page है, right? And it's targeting the keyword SEO for accounting firms, all right? So let me just extend my text box right here. ऑलराइट, सो हियर वी हैव, ऑलराइट. तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका यूआरएल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वेर इन नॉट ओनली द ब्रांड नेम अपीयर्स फर्स्ट बट ऑल्सो द कीवर्ड आफ्टर द फॉरवर्ड स्लैश, द कीवर्ड फॉर विच यू आर टारगेटिंग is itself present in the URL. So this is what you want to rank for. अब इस naked URL को बहुत ही seamlessly आप guest post में integrate करना शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है. And for that reason, I'd like to share a little bonus hack. But before I share my little secret, why don't you take a second and smash the like button, subscribe to my channel, and share this video amongst your friends. I'm really trying to build a strong community of aspiring entrepreneurs here. So help me succeed in this mission. Alright, so are you ready for this? Here we go. So what we can do is we can make use of anchor stacking. So let me just add it right here. So anchor stacking mein, we are not only utilizing the target keyword but also adding the brand name. For example, let's say I have something like this where Prerak Mehta is the founder of Net Mafia and SEO marketing agency based out of Mumbai, having a good track record of performing search engine optimization to the best of their abilities, and a call to action something like hire Net Mafia SEO agency out of Mumbai. And in the last, I could say Mumbai, India, to perform SEO for your accounting firm. Alright, and फिर यहाँ पे मैं मेरा ये जो URL है, I can just add it right here, something like this. Let me just scroll it so it's better visible to you all. Alright, let me just zoom out and here we have this. तो इसे कहते हैं एंकर स्टैकिंग. आप ये अपने गेस्ट पोस्ट के ऑथर बायो में इंक्लूड कर सकते हैं. बस इस बात का ध्यान रखना कि कंटेंट और द वर्ड्स अराउंड द एंकर टेक्स्ट आर हाइपर रेलेवेंट and make sure that the sentences that you're adding make sense for the article. But more notably, it contains the brand, which is right here, and also the keyword. You can see right here, SEO for accounting firms. So I have added both these things. Also, you can add a variation of it and you can even include your naked URL inside of this. Now this will give you a massive credit if you are applying all these different things within one single thing. Now this kind of author bio is generally included in a paid guest post and sometimes for free if you have answered a PR query. Not sure how to pitch and hire a query? Watch this video next.